वो डिलीट किया गया वो दिखे मुझे मुझे मेरे बैग में अब वो आता है अब हो गया मेरे पास क्या है देख बैग तो अपने पास ही है आपकी वेबसाइट देख इसके पास ए और इसके पास हाँ जो कुछ नहीं मेरे पास मॉर्गेज से एग्जाम होने के बाद मेरे पास वो वाली क्लास में अभी भी क्यों नहीं आया वो देखो मैं बोल रहा हूँ उसके आ गया ना तो 5 किलोमीटर से बता रहा हूँ अबे उस गोदन तेरे लेकिन जैसे कि तेरे सामने मैंने सोचा गाड़ी में थी वापस ये देखा हाँ वही सोच रहा था मैं कुछ नहीं मिला भाई मैं कर दे रहा हूँ तो ये साइड ठीक है साथ क्या बैठ क्या बैठ साथ के बैठ के स्टार्ट करके दूसरे कर दिया साथ क्या बैठ देखो सब लोग ने साथ का बैठ साथ देखो बैठ ये लिया और समझती है ये मेरा बैग जरा मुझे भी आ रहा है ना अच्छा बैग तो कोई नहीं उसने मैंने उसका पैकेट देख लिया था पीछे सर को बताया अच्छा मुझे बोल रहे हैं काउंटर पे especially मेरे नहीं एक ही निशाना वही निशाना उसको ही हटा ये थोड़ा सा है ये सब अगर डला ये
ये तो पहले बार नहीं आता तो फोर राइट मेरे पास में था फोर राइट मुझे भी ज्यादा बड़े तो वैसे ही थर्ड में तो कुछ नहीं है थर्ड में कंट्रोल टू पाया ये चलता भी क्या नहीं चलता क्या इधर तभी just showed him an example तो उसने वो उसको सब आंसर आने लगा ठीक है सर तो माइनस 1 ही दिया है थर्ड एग्जांपल just Okay. Let's see some of these real devices. Okay. So you have cell. Which cell? Electric cell, you write. Go to images. See, this is how it is. You know, when you break it, the electrolyte is inside. Electrolyte is around, and this is the electrode in between, and it is marked plus and minus. So, what is minus? Minus is the base itself. Okay, this outside casing itself is negative electrode. Okay, so if you go home, you can check this. This is how it is. Okay. Can everyone see? yes Okay, next is battery. Battery versus. So this is like multiple cell connected together. You have a battery like this. है ना? Car में जो होता है, closest battery you might have seen is. How many of you have seen car battery? By opening the bonnet. So the car battery is something like this. Inverter cell or battery you must have seen. है ना? So there are so many cells which are connected together to act as a battery. Then a pack of multiple cells, they are also acting as a battery. Okay. You have this kind of cell also, like in watches. What kind of cell is this? Lithium ion. Lithium ion. You know? Lithium ion. So there are many different types of technologies available. It looks like a coin, 25 paisa, 50 paisa coin. Now with digital currency, we have forgotten how the coin looks like. Huh? Okay. Next is you have plug key. So you will see all this when you enter the laboratory.
This is how it appears. So when these screws can be opened, okay, and the wire will be connected here. You have screws here. Then when you remove the key, it appears like this. So there is can you see there is a perforation between these two? Okay, so there is air. If you remove this, then it will be open, no contact. Clear? So that's what it is. The two screws are for connecting it in the circuit, connecting and opening from the circuit. All right. Then next is wire joint, so you can understand. Okay, let me show you electric circuit. Electric circuit. Ohm's law. Electric circuit connection. For Ohm's law. We'll be doing Ohm's law shortly. Ohm's law. See, this is how you'll be connecting the circuit in the laboratory. Can you see this? So this is the demo kit. Okay. But in the lab, you'll be connecting it like this. Electrical. Okay. So these are different devices. So this is how a rheostat looks like. So what do you have? You have two connections, A, B, and this is the jockey. This is movable. It is connected here in the circuit. The voltmeter looks like this, and this is the ammeter, right? And this is called battery eliminator because in lab they won't give you cells. Okay, you have to convert AC into DC, which is done with the help of this. And whatever volt you require, 2, 4, 6, 8, this is how you can vary the voltage. Okay, so whatever voltage you need, you can keep the knob at that. Currently it is set for 12 volt. So you can change the voltage and you can see how much the current varies in the circuit. Now Ohm's law circuit diagram. So this is the minimum devices you need to carry out your experiment. So this is plus, red color means high potential, plus. Then this is connected over here, plus to plus, okay. So this is series connection. The next connection will be from here. See how the connections are done. Everywhere, the polarities are maintained. Is the circuit complete? See, this is going through the device, through the circuit of the device. This is a closed continuous path. Okay, it is closed continuous path. Now, what if you would have connected this connection over here? Then it is not variable resistance. When the circuit was connected between these 2 points, you can't vary the resistance, then it is fixed resistance. The variable resistance has 2 functions. Either it can be used as fixed resistance or as variable. So to work as variable resistance, you have to connect this end and this end. Then you can change the position. So this resistance can be increased or decreased. Okay, that's the variation. So only when you connect it in this fashion, there is one more connection. This is left open now. So resistance is between these 2 points, this jockey and this is the wire.
So every wire, bigger the length, it has more resistance. So only this much winding of the wire is part of the circuit. This is not in the circuit. When you pull it over here, then more, the resistance is now increased. So this is called jockey. This is variable. Okay. So that's it. All these things. So this is series connection. It is connected next to device. And how this voltage is connected, you will see. Okay. So how this voltage is connected, there will be some resistance here in between. Okay, so that is in parallel. Got it? All right. So you can see YouTube videos yourself, right? This is another example of the same thing. So you can actually get the feel only when you connect it in the lab. So now let us see what is Ohm's law. Okay. Let's see what is Ohm's law. So first, वॉशिंग में काट किसी पास मेरे पास तो नहीं है भाई. कौन गया? Ohm's law. So this is the circuit diagram. Circuit diagram. Ohm's law is the practical. Okay, it is the relation between the applied potential difference, and according to the applied potential difference, how much current will flow. So when you increase the voltage, you have to check how much current is increasing. Okay, relation between V and I. That's Ohm's law. So suppose we have a circuit diagram like this. So there is a gap between the longer terminal and the smaller terminal. Don't join longer and smaller. Okay, it will break your cell. Now, then what you have to do is, you have to have this. A. Okay, and then you have this. You can put it down also. Here also it is in parallel only. This is R. Okay. Now what is the polarity? Look here. This is minus. This should be also minus. This should be plus. So on the meter you have the knobs of different color. Red color means plus. Black means minus. And cell bay also there is a marking. Then this side is minus, so this should be minus, and this should be plus. So you have to give the polarity from the cell's polarity. Okay, plus here, minus. Understood? This is P and this is your cell. Right? And this is rheostat. So how to change current in the circuit? Huh? So current is flowing from here. You can measure the value of current in ammeter. You can measure the value of potential difference across the resistance in voltmeter. So now you have to draw the observation table. Serial number E
I. So this is 5. So initially, let's say you have kept the voltage as 1 volt. It is showing 1 volt. That time also note down the current. Let's say this is 0.1. Let's say current is in milliampere. Okay, and this is in volt. Unit is volt. Current is you are measuring in milliampere. So this is 0.1. Then when you do this, you see that this becomes 0.2 milliampere. When you increase it to 3 volt, you see that this is 0.4. 3, sir. 0.3. Let's write it 1, 2, 3 only. Okay. 1, 2, 3. 4 करते थे यहाँ पे 4 मिलता है. 5 के लिए 5. This is how we are getting the readings. Okay. Then we calculate this ratio V by I. Okay. So when we calculate the ratio, what will we get here? 1. So this will be 1000. 1000. All will be 1000. This observation we get. So what do we find experimentally? We find the ratio of V upon I is always coming constant. This is experimental finding. So experimental finding. V by I is equal to constant. Okay? Just like refractive index. So this constant we have named as resistance. So experimentally, it is observed that V by I is equal to constant. That is V is equal to R. Okay. Where R is called. So what is R constant? Where the constant R is called. R is called resistance of the given conductor. So this R that you represent is actually a conductor or a load, whatever load you have used. Let's say the electric bulb. So every appliance has some kind of resistance. Okay, that is what the potential of the cell is driving the current through. Okay, so every load will have different resistance. Okay, so therefore V is equal to R. This is called Ohm's law. So since R is constant, we can also write V is proportional to R. R constant. So there is a direct relation between the applied voltage and the current flowing through the circuit. Okay.
So this is an experimentally observed fact. Now what is the unit of resistance? Unit of resistance. This ohm. The symbol is this. So what is therefore R is equal to d by I? This means 1 ohm is equal to 1 volt on 1 ampere. One volt upon 1. इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं. So how do you define 1 ohm? How do you define 1 ohm? When do we say that the resistance of the conductor is 1 ohm? When the current flowing through the circuit is 1 ampere and the current and the entire circuit contains a potential difference of 1 ohm. Entire circuit or where the potential difference we are measuring? Here, resistance of this conductor. When we apply potential difference across the conductor 1 volt, and if current flowing through the conductor is 1 ampere, then this conductor has a resistance 1. Clear? So this is the experimentally observed analysis. So how do we state Ohm's law then? First write till here, then I will give you a statement of Ohm's law. When you are ready, let me know. So what is this circuit diagram for? Ohm's law. Verification. So now we are going to state Ohm's law, and to verify that we require this in the lab. So we are going the opposite way. पहले हमने करके देखा, अब statement लिखें. So what does it states? It states that the current flowing through the conductor is directly proportional to the applied potential difference. Across it. Provided its temperature remains constant. Okay.
Whose temperature? Conductors. Conductors. Where the current is flowing through? To the conductor. So conductor's temperature should remain constant. That is, I is proportional to V. Current depends on voltage, or in direct proportion you can interchange. This is equal to so this is the experimental or empirical law. All the laws made after experiments are called empirical law. Okay. That is an experimental justification. Right. So using this data, you can also plot the graph, VI graph. So what will be the nature of VI graph? Straight line, correct? Because the current increases in direct proportion to voltage. So here V by I is equal to R in ohms. Not complicated. Now that you know what is the unit. So because conductor is not changing, what is changing is the applied V and I. Conductor is what it is. So resistance is the property for the given conductor. Okay. So VI graph. So you can put your V values here. I V in volt. I ampere over here. So you should get a straight. Correct. So what is the slope of VI graph? Resistance. Slope is equal to. So take any value. So this is for any 2 points. This here V1. I2. So this will be V2 minus V1. So graphically, this is how experimentally, if any conductor is given to you, you can plot the VI graph, okay, and find its resistance like this. Okay, slope of VI graph which is resistance. Okay. That is slope of VI graph gives resistance.
Okay. What if you would have drawn I versus V graph? Slope would give reciprocal of resistance, है ना? तो उसमें reciprocal of slope लेना पड़ता है. तो कभी कभी I की ग्राफ दे देता है और तुमको बोलेगा रेजिस्टेंस निकालो. तो तुमको जो भी आंसर आएगा उसका reciprocal लेना पड़ेगा. तो अभी अपने यहाँ पे टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट क्यों लिखा है? टेम्परेचर चेंज होगा तो क्या होगा? रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा. ठीक है? ऐसा क्यों होता है? व्हाट इज रेजिस्टेंस? अभी चलो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन लिख लेते हैं. It is the measure of opposition to the flow of current. By the here. तो ये ऑपोजिशन आता क्यों है? क्यों होता है ऑपोजिशन? Why there is opposition? चार्जेस तो फ्लो होना चाहिए. सही. क्यों मतलब? अब जैसे हम यहाँ जा रहे हैं तो हमारा फ्रिक्शन है ना, दो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन हो रहा है. यहाँ पे चार्ज को फ्लो करने से क्या रोका है? सर ऑपोजिट पार्टिकल्स के चार्ज ये प्रोटॉन्स का अट्रैक्शन वो सब थोड़ा. लेकिन वो तो ऑलरेडी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, इसलिए तो फ्री. वो तो फ्री इलेक्ट्रॉन. अगर ऐसा पुल करता हो ऑपोजिट चार्ज तो बाहर ही नहीं निकलता ना वो. ये तो अभी तो निकल गया. हाँ, रेजिस्टर्स यूज करते हैं लिमिट करने के लिए, लेकिन वो ऑपोजिशन होता क्यों है वो समझ लो. देखो, इफ यू सी द मैग्नीफाइड यूज ऑफ कंडक्टर, अल्टीमेटली कंडक्टर में है क्या? इट इज फुल ऑफ positive and negative ions. Positive, fixed positive ions, right? And free electron. ये सब वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं, खाली बाहर वाला. ठीक है? तो उसमें मोबाइल क्या है? खाली फ्री इलेक्ट्रॉन्स. वही मूव कर रहा है, ये तो मूव नहीं कर रहा. So while moving, they sometimes get collide. Okay? They suffer collision. ठीक है? तो it's not a free movement of electrons. जैसे कोलाइड कर करके जाता है और यहाँ से यहाँ तो यहाँ कोलाइड हो जाएगा. ठीक है? सो द इलेक्ट्रॉन कोलाइड्स विथ द स्टेशनरी पॉजिटिव आयंस एंड फेलो इलेक्ट्रॉन. ठीक है? कोलिजन पार्टिकल्स तो दो ही, लेकिन स्टेशनरी पॉजिटिव एटम फिक्स्ड है, इसलिए तो सॉलिड है. इट इज नॉट वाटर दैट इट विल फ्लो, है ना? खाली क्या फ्लो होता है?
जो फ्री चार्जेस है वही फ्लो। सो इट इज लाइक इट ड्रिफ्ट्स, इट कोलाइड्स, कम्स बैक, फिर यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस लगा के रखा हुआ, ठीक है। तो इसकी वजह से ये एंड क्या है, नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव पोटेंशियल रहेगा, फिर पॉजिटिव इसको अपनी तरफ खींच रहा है, कोलॉइड है थोड़ी देर पीछे जाता है फिर से आ रहा है, बट इट्स नॉट अ फ्री फ्लो। तो जहां पे ज्यादा कोलिजन होगा वहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो डिपेंडिंग अपॉन मटेरियल टू मटेरियल, कॉपर का कम है, सिल्वर का और कम है, तो इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, जिसमें कम कोलिजन होगा वो बेटर कंडक्टर होगा, यानी बेटर कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। समझ आए? दैट्स हाउ वी सेलेक्ट, ठीक है। अब टेम्परेचर से क्या लेना देना है? If the temperature of the conductor rises, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, ये जो स्टेशनरी चार्जेस है ये वाइब्रेट होगा, ठीक है। तो अभी जैसे तुम लोग बैठे हो, यहाँ पे बैठे हो चुपचाप, तो मैं जा सकता हूँ, है ना। अब मैं बैठा हूँ और तुम लोग ने ऐसे ऐसे करना शुरू किया तो इट विल ऑब्स्ट्रक्ट माय मूवमेंट, ठीक है। तो ऑब्स्ट्रक्शन विल इंक्रीज विद टेम्परेचर, बिकॉज नाउ these stationary charges are not only blocking the movement of electron, but it is blocking more now, ठीक है, क्योंकि वाइब्रेशन और इंक्रीज होगा टेम्परेचर से, इसके लिए तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ओके, दैट्स व्हाई एट so resistance for a given conductor is constant only at a fixed temperature, ठीक है। यहाँ तक लिख लो। So more, think of it in terms of collision, then the opposition will be very clear to you. Can I erase this? Now, factors that affect resistance. Now, this is experimentally observed fact. It is observed that R is directly proportional to length of the conductor. जैसे अगर हमने एक वायर लिया है, ठीक है, सेम थिकनेस का, मान लो इसका L है लेंथ, अब इसको डबल कर दिया लेंथ, सेम थिकनेस रखा है, लेंथ कितना कर दिया 2L, तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा कि नहीं? क्यों? सर क्योंकि जितना लंबा होगा उतने ज्यादा पॉजिटिव पार्टिकल्स उसके कोलिजन के लिए, उतने ज्यादा कोलिजन होगा। थिंक ऑफ रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कोलिजन्स। कम पाथ में कम कोलिजन होगा, ज्यादा पाथ में कोलिजन डबल हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? अगर ये R है लेंथ के लिए, तो इसका कितना हो जाएगा 2R, इसलिए okay, resistance is directly proportional to the length of the conductor. Second factor क्या है? अब देखो, अभी हमने लेंथ सेम रखा है, ठीक है, लेकिन थिकनेस डबल कर दिया, थिकनेस क्या कर दिया? डबल। ये पहले कितना था A, अब क्या कर दिया 2A। अब क्या होगा कोलिजन का स्पीड? कोलिजन हाफ हो जाएगा, कोलिजन हाफ हो जाएगी। क्यों? अब देखो ये कैसे है, इसको मैंने डबल कर दिया, तो आई विल बी मोर कंफर्टेबली एबल टू वॉक, इट विल बी इजी फॉर इलेक्ट्रॉन टू नेविगेट, ठीक है। नाउ इट हैज अ वाइडर स्पेस। तो अब देखो, तो यहाँ पे R is
inversely proportional to area of cross section. L क्या है? L is length of conductor. यहाँ पे क्या है? Area. A is area of cross section. Cross section. ठीक है, तो डायमेंशन पे डिपेंड करता है और किस पे डिपेंड करेगा? ऑब्वियसली टेम्परेचर पे तो करेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो कोलिजन बढ़ेगा, R is directly proportional to temperature as well, and it also depends on the material of the conductor, like copper के लिए अलग है, सिल्वर के लिए अलग है ना? So R is directly proportional to temperature. Then R also depends on nature of substance. Or nature of substance. Yes. Material or conductor. चार चीज पे डिपेंड है ना, डिफरेंट फॉर कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, ऐसे। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ ठीक है ना, ये तीन चार चीज पे डिपेंड है। ठीक है, तो ऑल दिस थिंग्स आर एक्सप्लेन्ड इन योर बुक विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटीज। जैसे ओम्स लॉ के लिए एक एक्टिविटी है, फर्स्ट एक्टिविटी इज फॉर ओम्स लॉ, सर्किट डायग्राम दिया है कैसे करना। दूसरे में देखो ये क्या है, इट्स डिपेंडेंस ऑन So, like I said, अभी यहाँ पे between these 2 points in the second activity, different things are connected, different loads. तो हर एक के केस में ये constant की वैल्यू अलग अलग आ रही है। एक ही चीज के लिए टेबल बनाओगे तो हर एक के लिए रख के टेबल बनाओ कि constant की वैल्यू अलग अलग है। So resistance is for the given load. यहाँ पे 3 लोड दिए हैं, ठीक है, समझ आ गया? So resistance is constant only for a given load. यहाँ पे लेंथ और थिकनेस का दिया है, देखो अलग अलग थिकनेस के कंडक्टर है और अलग अलग लेंथ के कंडक्टर, ठीक है। ये सब एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है और ये कंक्लूजन है उसका, ठीक है। ऑल दीस फाइंडिंग्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स कंडक्टेड, ठीक है। तो अभी इफ वी कंबाइन दीस टू, तो अभी इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? Resistance is not a characteristic constant for a given material. If the dimension changes, तो resistance भी बदल जाता है ना। 1 मीटर का कॉपर कंडक्टर का कुछ रेजिस्टेंस होगा, 2 मीटर का कॉपर कंडक्टर लिया तो उसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। इट इज नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। एक मतलब कुछ थिकनेस का कॉपर कंडक्टर लिया और सेम लेंथ का लिया, लेकिन थिकनेस चेंज हो गया, रेजिस्टेंस चेंज हो गया, तो ऐसा नहीं चलेगा। We need some unique characteristic for a given material. इसके लिए क्या करेंगे? So combine करो results 1 and 2. One and 2 क्या मिलता है? R will be proportional to L by A.
ये मिलेगा, है ना? Directly proportional to L, inversely proportional to A. Constant निकालो, proportionality तो will get a constant. What is rho? It is called resistivity. Where rho is called specific resistance or resistivity for a conductor of given material. Now this is unique for a given material. As long as it is copper, its resistivity is going to remain same. Because what is resistivity? And it is a characteristic constant for a given material. It is a characteristic constant for a given material. Okay? Now it is defining characteristic. As long as it is copper or aluminium, its specific resistance will remain same. Am I going too fast? Huh? If you feel so, just I'll go slow then. So first we have arrived at the mathematical relation. Now we'll define what is specific resistance. Okay. So in the above relation, if L is equal to 1 unit and A is also equal to 1 unit, then rho will be equal to what? If we take L and A as 1 unit, what do we get? Rho is equal to what? So we will use this to define specific resistance. So specific resistance is the resistance of a given material related to substance groups of unit length and unit cross sectional area. ठीक है, ऐसे डिवाइड
What will be its unit? Its unit is ठीक है ठीक है। यहाँ पे अभी हमने लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फिक्स कर दिया, अभी डायमेंशन का चेंज ही नहीं होगा। यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए ही डिफाइन होता है, ठीक है। व्हाट विल बी इट्स यूनिट? देखो फॉर्मूला ओम मीटर, बिकॉज ए क्या है मीटर स्क्वायर बाय मीटर इज मीटर, ओम मीटर, ठीक है। सो derived unit, if you know the formula you can easily calculate. So you have the table given in your volume for different substances with their resistivity values. Page number 116. So now we have made resistivity independent of length and area of cross section. So resistivity will depend on only these two factors, the material and temperature. So we have made the length and area of cross section dependency, we have finished it. ठीक है? Sure. Are we good till here? Okay, हमने एग्जांपल 11.3 नहीं किया था ना? Let's do that. Because now there are so many questions, so new questions can be 11.6. ठीक, sure. Done? Can I erase it? Yeah. Okay, so read the question. So what's given is potential difference. E is equal to 60 volt. Then it draws a current of 4 ampere. And what current will the heater draw if the potential difference is increased to? So for V1, I1 is this, right? So when V2 is made 120 volt, you are supposed to find what is I2. Right? Is the appliance changing here? If the appliance is not changing, appliance is heater in both cases. So will its resistance remain constant? Yes. Okay. So for a given load or for a given appliance, the resistance does not change. Right? So since V1 upon V2, V1 upon I1 is equal to V2 upon I2 is equal to constant. Both are, and that will be equal to R. Right? So this makes V1 upon I1 V2 upon I2. We have to find I2. So for I2 is equal to V2 into okay.
This is how it is. Because resistance is going to be constant for a given device. Okay? So this is what 120 over 60. 8. So this will be 8. Next. You can, if you are overwhelmed, you can just write for a given heater, resistance has to be constant. For a given heater, only then this relation works. How much current will an electric bulb draw from a 220 volt source if the resistance of the bulb's filament is 1200? Yes. This is by Ohm's law. All these questions are Ohm's law questions. What do you mind? Current diya. I will tell you. So what is V? 220 by 1200. So this will be ampere. How much is this? This is 11 by 60. 6 no, 6. Yes, 0.14. Correct? Is it correct? 183. 183. What is it in the just divide. This is 1.1, right? 11 by 6. Now, like, this is 5, right? 5 over here, point. Oh, 6. This is 6, 8, and 40. Correct. 1.866. मस्त ये वो चला गया। 1.866. तो ये क्या होगा 1.8 बाय ये 0 भी है ना इसका 0.1 ठीक है 2 डेसिमल तक कर दो सब ओके तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया सेकंड पार्ट में क्या है राइट सेकंड पार्ट क्या निकालना है हाउ मच करंट विल एन हीटर coil draw from 220 if the resistance of heater coil is ये भी करंट ही निकालना है V by I in this case I is equal to V by what is V 220 by 100 2.2. which will be 2.2 only so see this example illustrates if the resistance is less the current flow is more when the resistance is more the current flow is less from the same source okay does this give you the idea about the load resistance okay this is what it is okay next is for example
example. Now a wire of given material of length L, area of cross section A, and resistance of 4 ohm. So what is done is, this is example 11.5. So you are provided with wire of length L, an area of cross section A, right, has got a resistance R. ठीक है, क्या है यहाँ पे? And this is one set L, A and R. Now in the second case, you have wire of length 1/2 and area 2A. So to find what is the resistance, R dash equal to what? Obviously resistance will change. Material is same material, right? Is it same material or different material? Same material. So what will you do now? The solution. Since R is equal to rho L by A, it is same material. What will be R dash? So this will be L by 2 divided by 2A, no? 2A. So R dash must be this, because this formula is valid for all situations as long as the material is same. If the material is different, then rho itself will change. As long as the material is same, rho will not change. Correct? So now take the ratio, divide 2 by 1, or no need to divide. So this is what? L by 2. So this will be 1 by 4 times. But what is rho L by A? R. Okay. So when you change the configuration of the same material of the wire, its resistance will change, because resistance is dependent on dimension. What is not changing? Resistivity. Resistivity is not changing. Clear? So have they given the value for R? 4 ohm. So what will be the new resistance? For R dash equal to 4 by 4 equal to this answer. So many questions will be solved logically. You cannot, substitute direct formula. So bring it in the most simplified form and solve. Rho L by A is R. Getting it? हाँ? थोड़ा सा लॉजिकल है इसमें. देखो इसमें क्या किया हमने? You may write since इसको ऐसे लिख लो ना. This is from 1. Rho L by A from 1 is R. And question में क्या given? R is equal to कितना है? 4 ohm है ना? देखो given. R को 4 डालो तो नया वाला R क्या आएगा? ये निकाल सकते. नए वाले R में क्या किया है? उसका लेंथ हाफ कर दिया है और एरिया डबल कर दिया है. It's like this. समझो ये वायर था ऐसे, है ना? इसको बेंड करो, थिकनेस डबल हो गया, लेंथ आधा हो गया. दोनों साइड से ज्वाइन करके अभी इसको सर्किट में लगा दिया. ठीक है. कभी कभी क्या करता है, वायर ऐसे है, ठीक है, उसको स्ट्रेच कर दिया. अब क्या हो गया? लेंथ डबल हो गया, एरिया हाफ हो गया. वॉल्यूम तो चेंज नहीं हो रहा. जब भी लेंथ इंक्रीज होगा एरिया कम होगा, जब भी लेंथ
डिक्रीज होगा सेम सब्सटेंस का, उसका थिकनेस बढ़ जाएगा। इनवर्स रिलेशन है एल और ए में, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला अपने से ट्राई करो, थोड़ी देर पढ़ लो, इससे ट्राई करो नेक्स्ट वाला। समझ आया क्या करना है? भाई सबको समझ आ रहा है ना, या मैं बहुत ज्यादा भरते जा रहा हूँ? नहीं ना, जस्ट फील फ्री टू आस्क, कहीं पे भी जरूरत हो, है ना। तो पहले तो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है उसको लिख डालो, फिर लिखो क्या निकालना है, उससे तुम्हें समझ आएगा फॉर्मूला क्या यूज, ठीक है। हमेशा राइट डाउन द गिवन क्वांटिटीज एंड व्हाट यू आर सपोज्ड टू फाइंड। तो क्या क्या गिवन है पहले बताओ। एल दिया है और क्या दिया है, आर, हाँ डायमीटर दिया है ना। तो डायमीटर दिया तो उससे कैसे एरिया निकलेगा, डायमीटर से निकल जाएगा, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, सर्कल है, पाई आर स्क्वायर, और आर क्या है, डी बाई टू। बस इसमें एरिया डायरेक्टली नहीं दिया, ठीक है, इसमें डायमेंशन या थिकनेस रेडियस के फॉर्म में दिया, डायमीटर दिया। सो देखो इसमें हमको क्या निकालना है, प्रेडिक्ट द मटेरियल ऑफ द वायर, मतलब तुमको निकालना है रेजिस्टिविटी। मटेरियल का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, रेजिस्टिविटी। इस क्वेश्चन में जो निकालना है रेजिस्टिविटी। सो एग्जांपल 11.6 given 1 मीटर, ठीक है, R is equal to 26 ओम। टेम्परेचर का कोई रेलेवेंस नहीं है, टेम्परेचर गिवन है मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, फिक्स टेम्परेचर। डायमीटर ऑफ द वायर इज इक्वल टू 0.3 mm, ठीक है, दिस इज 0.3 10⁻³ मीटर हो गया, okay. What will be the resistivity? Resistivity income. So since R is equal to rho L by A, therefore this is equal to RA by L. This is R by L.
ये कितना होगा बाय आर स्क्वायर, ठीक है। दिस इज इक्वल टू आर बाय एल इंटू पाई, ये होगा डी बाय टू स्क्वायर। निकाल लो, अभी आर कितना दिया है 26, एल है 1, ये कितना है 3.14, यहाँ पे 22/7 जब दो यूज हो, डी कितना है 0.3 डिवाइड बाय 2 इंटू 10⁻³ होल स्क्वायर, इससे तुम्हारा रो आ जाएगा। एल कितना है 1 है, एल 1 है ना, सॉल्व करो रो कितना है। ये ना एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखोगे, सो देयरफॉर रो इज इक्वल टू ये कितना है 0.3 इंटू 0.3 डिवाइड बाय 2 इंटू 2 इंटू ये क्या हो गया 10⁻⁻⁶, ठीक है। तो कट करो 2 3 जा, इसको कट करो कितना आ गया 13 इंटू 1.57 to 0.09 into 10⁻⁻⁶. Over 13 into 9 into 157, कितना हो गया 10⁻⁻10, है ना। ओके, ओम मीटर निकालो उसको। हाँ ले सकते हैं, लेकिन कुछ एडवांटेज है क्या वो देने में, 7 से कुछ कटेगा नहीं तो डिवीजन में आ जाएगा, ऐसे मल्टीप्लाई कर, एडवांटेज हो तो ले सकते हैं। इसके लिए मैंने बोला था बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में रखो, लेकिन 7 से क्या कटेगा, कुछ कटेगा है ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो। ये कितना होगा 3 9 जा 117 27 117 into 1, बस ये दो चीज मल्टीप्लाई कर दो, देखो कितना आता है 1.7 into 157, one 8 3 6 9 something 1.869 कितना है 1 2 3 4, इसमें से 4 निकालोगे कितना आएगा 1.8369 into 10⁻⁶ ओम मीटर। और टेबल में चेक करो ये कौन से मटेरियल, manganese 1.8 कितना है मैंगनीज 1.8 times 10⁻⁻6 meter. तो दिस इज लाइक मैंगनीज। So material identified is manganese from the table, वो तुमको आइडेंटिफाई करना मैंगनीज, समझ आ गया। तो जो टेबल दिया है बुक में उसमें से आइडेंटिफाई करना है तुम्हारा वैल्यू क्लोजेस्ट कौन सा है मैंगनीज। अब वो जो वैल्यू प्योर मैंगनीज का होगा, ये हो सकता है प्योर नहीं हो, तो आगे पीछे, ठीक है। क्लोजेस्ट बोला है ना, इक्वल नहीं बोला है, क्लोजेस्ट, ठीक है। So we have come a long way in this chapter. The foundation is done. The real thing to be understood is still here. The rest is just application. ये पूरा फाउंडेशन था यहाँ तक। इसमें मेन कॉन्सेप्ट क्या सीखा हमने, पोटेंशियल डिफरेंस। उसके बगैर कुछ चलने वाला नहीं है, कोई भी चार्ज मूव नहीं होगा। फिर वो जो चार्ज चल रहा है वो क्या है, करंट, उसी से हमारा जो भी वर्क होता है। करंट जब तक चलेगा नहीं कोई भी अप्लायंस फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद क्या सीखा हमने, फिर हमने रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ सीखा कि हाउ द करंट वेरीज व्हेन वी वेरी द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पहले V और I डिफाइन किया, फिर हमने फंक्शन देखा रियल उसमें, ठीक है ना, तो वो ओम्स लॉ देता है।
तो एक बार ओम्स लॉ हमने सीखा तो उसमें से हमको क्या कॉन्सेप्ट मिला, रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब रेजिस्टेंस इज द मेजर ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, कितना करंट जाएगा कितना नहीं जाएगा वो कौन डिसाइड करता है, रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस हर डिवाइस का अलग अलग होता है, हर डिवाइस का रेजिस्टेंस अलग अलग होता है, ठीक है। सेम डिवाइस में व्हील चेंज करेंगे तो करंट चेंज होगा डिवाइस में, लेकिन डिवाइस ही चेंज कर दिया तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने रेजिस्टेंस का डिपेंडेंसी देखा, डिफरेंट फैक्टर्स, लेंथ पे कैसे डिपेंड होता है, मटेरियल सेम रखा है लेकिन डायमेंशन चेंज कर दिया, लेंथ और एरिया, तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हमको उसके जो लेंथ और एरिया से डिपेंडेंसी खत्म करना है, सिर्फ मटेरियल पे लेके आना है, यूनिक मटेरियल, तो क्या आपने डिफाइन किया, रेजिस्टिविटी, ठीक है। रेजिस्टिविटी ने वो डायमेंशन का डिपेंडेंसी खत्म कर दिया, अब किस पे लेके आ गया, मटेरियल पे, तो हम यहाँ तक आ गए, ठीक है। अब हर एक मटेरियल का रेजिस्टिविटी हमने कैलकुलेट करके हमारे पास टेबुलर फॉर्म में पड़ा हुआ, तो हमारे को क्या एप्लीकेशन है वो हिसाब से हमें पर्टिकुलर मटेरियल का कंडक्टर चूज कर सकते हैं। अगर हमको सिर्फ कनेक्टिंग वायर चाहिए तो कनेक्टिंग वायर का क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, है ना। तो हम देखेंगे कि कौन से वाले का रेजिस्टेंस सबसे कम है, कंडक्टर में देखेंगे, तो जिसका रेजिस्टिविटी कम है वो कंडक्टर होने के लिए सुटेबल है, कनेक्टिंग वायर, कंडक्टर यानी कनेक्टिंग वायर। अब एलॉयज, एलॉयज क्या है, उसका रेजिस्टिविटी ज्यादा है, तो वो हम रेजिस्टर्स के लिए यूज करेंगे सर्किट में, ठीक है। अभी जैसे हमको ये 5 स्पीड चाहिए, 5 स्पीड चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, 5 अलग अलग रेजिस्टर्स लगाना पड़ेगा। तो जब हमने नॉब चेंज किया तो एक रेजिस्टेंस से निकल के दूसरे रेजिस्टेंस पे चला गया, समझ में आया। तो वो रेजिस्टर्स कैसे बनेंगे, एलॉय से बनेंगे, क्योंकि उसमें ज्यादा रेजिस्टेंस है, किसी में कम है ना। फिर हमारे को इंसुलेटर भी चाहिए, हमें ऐसी भी चीज चाहिए जहां से करंट पास नहीं हो, जैसे अभी वायर है, कंडक्टिंग वायर, अगर इसको हम इंसुलेटर नहीं लगाएंगे तो हाउ विल वी डील विद इट, शॉक लगता रहेगा, है ना। स्विच हमारा कैसा मटेरियल होना चाहिए इसका, इसमें से करंट पास नहीं होना चाहिए, हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए, नहीं तो हम ऑपरेट कैसे करेंगे डिवाइस, ठीक है। तो हर चीज का यूज है, ठीक है ना। डिपेंडिंग अपॉन व्हाट द यूज इट इज वी विल सेलेक्ट अ मटेरियल, ठीक है। तो सबका रेजिस्टिविटी पता होना जरूरी है। Now how much time is remaining? 10 minutes. ठीक है, I'll just leave you with combination of resistors. ठीक है. So depending upon how we want to play with the current, wow, play is started already. How we want to limit the current in the circuit, okay? Then various combinations of resistances are possible. So let's design. अब circuit designing में हम क्या करते हैं? Resistance को कैसे connect करें कि हमको उतना जितना current चाहिए उतना ही मिले, ठीक है? तो उसमें 2 टाइप के कनेक्शन है, सीरीज एंड पैरेलल। So combination of resistances. रेजिस्टर्स, रेजिस्टर क्या होता है, डिवाइस, रेजिस्टेंस क्या होता है, उसकी वैल्यू, ठीक है। तो मान लो सीरीज में सबसे पहले सीरीज कनेक्शन, so in series connection we connect resistances one after the other. ये हो गया। अभी ये मान लो इसकी वैल्यू R1 है, इसकी वैल्यू R2 है, इसकी वैल्यू R3 है। अब इसमें हमने क्या कनेक्ट कर दिया, वोल्ट, ठीक है। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मान लो ये सेल का कितना है, V, ठीक है। अब ये क्या करेगा, सेल की वजह से क्या फ्लो होगा, करंट। तो इसमें कितना पाथ है करंट फ्लो होने के लिए, एक ही पाथ है,
है ना, एक ही लूप है, तो सेम करंट जाएगा हर एक रेजिस्टेंस में, बट हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है क्या? नहीं, तो ऑपोजिशन अलग अलग होगा, होगा ना, तो सेल को अलग अलग वर्क करना पड़ेगा चार्ज मूव करने के लिए। यहाँ अपोजिशन कम है वहां पे कम वर्क करना पड़ेगा, जहाँ पे ज्यादा है वहां पे ज्यादा, ठीक है ना। सो दैट मीन्स यहाँ पे इसका जो वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा V3। तुम यहाँ पे जब पैरेलल में वोल्टेज मीटर लगाओगे तो यहाँ पे तुम्हें दिखेगा V1, यहाँ पे दिखेगा तुम्हें V2, यहाँ पे तुम्हें दिखेगा V3, क्योंकि रेजिस्टेंस अलग अलग है, करंट सेम जा रहा है, ठीक है, सेम करंट जाएगा ना, एक ही तो करंट है और क्या है, बट लाइक ऑब्स्ट्रक्शन होगा करंट में, ऑब्स्ट्रक्शन अलग है बट सेल इज फोर्सिंग ना सेम करंट थ्रू ऑल द थ्री रेजिस्टर्स, पाथ एक ही है, तो जितना करंट जाएगा उतना ही तो आएगा वापस, एक ही लूप है ना, ठीक है। सो अब करंट इज सेम, सो इन सीरीज current through all resistors will be, all resistors will be same, ठीक है ना, current through all resistors will be same, तो therefore अब ये क्या हो जाएगा, जो तुमने अप्लाई किया V वो कैसे डिवाइड होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि V क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज है ना, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज हर एक रेजिस्टेंस में अलग अलग होगा, यहाँ पे सेम कैसे होगा, ऑब्स्ट्रक्शन अलग अलग है तो वर्क डन भी तो अलग अलग होगा, सेम चार्ज, है ना। तो अब यहाँ पे ये क्या होगा, अभी मान लो हमने ये पूरे रेजिस्टेंस को हटा के एक ही रेजिस्टेंस बना दिया, ये पूरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है इसका, ये R1 R2 R3 की वजह से जो सीरीज रेजिस्टेंस कितना है RS, लेकिन करंट तो ये जितना दे रहा है I ही दे रहा है ना उसमें, ये क्या है, V will be I by IR, हाँ it is IRS by Ohm's law, ठीक है। So what is RS? Equivalent resistance of series combination, यहाँ पे क्या होगा, IR1 IR2 IR3, so therefore I cancel हो गया, so RS कितना होगा, R1 plus R2 plus R, ठीक है, ये फॉर्मूला बनता है सीरीज कॉम्बिनेशन। सो अगर हम R1 R2 R3 को एक सिंगल रेजिस्टेंस RS से रिप्लेस कर दें तो वो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है, therefore equivalent RS is equivalent resistance of series combination R1, R2 and R3। तो कितने भी रेजिस्टेंस तुम सीरीज में लगा दो तो सबका सम क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना भाई। इन तीनों का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, इट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट ऑफ इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है RS, तो करंट तो चेंज नहीं होगा क्योंकि ये तीन लगाने से जितना करंट जा रहा है उतना ही जाएगा ना, समझ आ गया, लिख लो इसको। तो मेन जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है इन सीरीज सर्किट, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है,
सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है? करंट थ्रू ऑल रेजिस्टर्स विल बी सेम. पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे, पहले लिख लो उसके बाद देखेंगे. लिखिए, लिख लो. इसमें तुम वोल्ट मीटर लगाओगे ना, सब में अलग अलग वोल्टेज दिखाएगा सीरीज में. स्कूल में तुम लोग का आवर्स कितना होता है? स्कूल ड्यूरेशन 6 hours. नहीं तो है, उससे ज्यादा तो है, लेकिन 6 आवर्स में कितने लेक्चर्स होते हैं? छोटे छोटे लेक्चर. तो वैरायटी और इन बिटवीन ब्रेक्स भी उतना ही होगा. ब्रेक्स होते हैं, बहुत ब्रेक्स कम होता है. ब्रेक्स का होता है, मतलब जैसे एक फैकल्टी का दूसरा आ जाए. ऑफिशियली और दिखाते हैं ऐसे कि जैसे एक खत्म होगा दूसरा आएगा, लेकिन होता क्या है 10 मिनट बाद 10-12 मिनट तो लेट हो ही जाते हैं टीचर. अच्छा 10-12 मिनट. कभी कभार. और लेक्चर ड्यूरेशन ही 30-40 मिनट का होगा. कितना होगा? 30-40 मिनट 40 मिनट्स का. मतलब ठीक है, यहाँ थोड़ा सा लंबा है ना, 90 मिनट्स. So you can get up and sit down in between. I mean, don't feel so regimented. Whenever you feel like रुको थोड़ा सा रुको, ऐसा बोल सकते हो. Because I have to take another batch 3 hours. हम भी 7:30 से ही आए हैं तुम्हारे साथ में, but it's long haul for us. Shall I cover parallel or no? Right? After the break, you will go home. Oh, bhai. Oh yeah, I keep leaving. Yes. Yeah, maybe chat right now. No, but we don't have enough time. You can just see the diagram. Everybody's done writing. There's a parallel combination, man. Now we will not connect it like this, not one after the other. You can just draw the diagram and do the explanation in the next class. R1 is like this, R2 is like this, and R3 is, okay, so there is all the 3 resistances and R3 are connected together like this. Okay, so do we have the same current path now? No. So cell will provide, current is the charge, cell provides charges, okay? So total current is I. But now you have different paths. So I1 will go from here, I2 will go from here. Here there was single path. Everybody look here. Here there was single path. So same current was forced through all the 3 resistances. But here you have different currents. Okay, we'll do it in the next class. Explanation is big. चलो क्या? मेरे को सफाई नहीं आएगी भाई. वो नहीं आएगा. What?
तेरी भाभी खानी वो तब तो पहले चल लगा ए मैं बहुत ना पहले बात ही घूमते थे अरे मेरे को कंप्लीट कर कुछ सेंड कर ले क्वालिटी का सेंड तो ये मैंने ही ले लिया थोड़ी दूसरा ले के मैं नहीं डाली मैं टोपी निकाल लूंगा हां ये इतना ओके आई जस्ट प्ले शॉप हीरो पहले के नहीं बैठे था हम पहले के बैठते हां ऐसे पूरा 2 सेकंड में निकल गए हमारा क्या नहीं रहता तो बोलना चाहिए उससे वाला ये कलरफुल प्लेट अरे भाई ना लिख दे ना आलस आते थे मुझे नोट लिख ना नोट्स लिख दी नहीं और लिखते थे मैं टेक्स्ट बुक होती है ना तब मैं नोट से और स्टिकर पर से पढ़ लेती हूँ जल्दी जल्दी स्टिकर पर से जल्दी हो जाता है और हमने सारे बुक्स चला के ऑनेस्टली बता तो यूपी की बुक रोज खोलेगी फिर रिवीजन करेगी हाईलाइट कर लेना हां तो हाईलाइट किया हुआ है और फिर लास्ट में वो 100 तक कुछ नहीं पता वो रहता भी नहीं इतना टाइम मैं खोल के रिपीट देती हूँ एक्चुअली मैंने गाना था ऊपर से देखी थी और क्या करती थी हमारा नहीं हमारा